Hello students, how are you all? Hope so all of you are fine and happy. Welcome to my YouTube channel, Biology in Seconds. Today we will discuss the introduction to respiration and its types aerobic and anaerobic respiration. रेस्पायरेशन तो इससे पिछले प्रोसेसेस में हमने एनर्जी को बनवाया बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. अब हम करवाने चाह रहे हैं रेस्पायरेशन. तो डियर स्टूडेंट्स, व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ रेस्पायरेशन? सो रेस्पायरेशन इज नीडेड. Respiration is needed to get energy for performing the vital activities by our cells. Clear? So that is the need. अब dear students, एनर्जी रेस्पिरेशन से कैसे हासिल होगी? तो डियर स्टूडेंट्स, यू नो कि रेस्पिरेशन के लिए, एनर्जी के लिए हमें ब्रेक डाउन करवाना है ग्लूकोज का, यानी कि हमारा जो रेस्पिरेटरी फ्यूल है, द मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी फ्यूल, तो इसका ब्रेक डाउन करवाना है. तो इसका ब्रेक डाउन किस सूरत में होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो डियर स्टूडेंट्स, वो ऑक्सीजन कहां से आती है? दैट वी इनहेल. ठीक है, सो इट इज रिलेटेड टू दिस. तो रेस्पिरेशन दो लेवल्स पे हो रही है. एक को हम कहते हैं ब्रीदिंग, that is a mechanical process in which there is exchange of gases, that is oxygen and carbon dioxide between atmosphere, or we can say environment, and the organism, जिसकी वजह से हम इसको ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन भी कहते हैं. ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड ऑर्गेनिज्मिक लेवल रेस्पिरेशन. क्लियर? और एक वो रेस्पिरेशन है जब यहां से ऑक्सीजन डिफ्यूज करके from the lungs it enters into our bloods, through pulmonary veins it enters into our circulatory system. तो अब वो सेल्स को पहुंचाई जाएगी ताकि सेल्स के अंदर मौजूद जो फूड है, जो डाइजेस्ट हो चुका है, जो एब्सॉर्ब हो चुका है, उसको इस्तेमाल किया जा सके, जो सेल्स के अंदर मौजूद फ्यूल है. क्लियर? और दूसरी जो टाइप है, दैट इज नोन एज सेलुलर रेस्पिरेशन. तो जो रेस्पिरेशन सेल लेवल के ऊपर हो रही है वो कहलाएगी सेलुलर रेस्पिरेशन, एंड वी आर हियर इन दिस टॉपिक कंसर्न टू दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन. क्लियर? सो ब्रीदिंग ये एक मैकेनिकल प्रोसेस है, एक फिजिकल प्रोसेस है इन्वॉल्विंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. ठीक है, सो सेलुलर रेस्पिरेशन it occurs at cell level in which the carbon hydrogen bonds present in the food are broken down to yield energy, usually in the form of ATP, the energy currency of our cells. Clear? तो डियर स्टूडेंट्स, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड आपने पढ़ा कि ये पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी है. दिस बॉन्ड, कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है, जब ये बॉन्ड बनता है तो एनर्जी इस्तेमाल होती है, लेकिन जब ये बन चुका होता है तो एनर्जी इसके अंदर मौजूद है, इसके टूटने पर वो एनर्जी रिलीज होगी. सो दैट इज व्हाट इट इज डन इन एट द सेलुलर रेस्पिरेशन. हम अगर इसको एक सादा तरीके से समझने की कोशिश करें तो ब्रीदिंग में भी क्या होता है, ऑक्सीजन हम डिफ्यूज करवाकर अपने बॉडी के अंदर लेकर के आ रहे हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सहेल्ड आउट. और सेलुलर लेवल पे भी यही हो रहा है कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है विद इन द सेल, और उसको यूटिलाइज करके जो हमारा फूड है उसको ऑक्सीडाइज करवाया जा रहा है, और उसकी ऑक्सीडेशन के नतीजे में क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड हीट. अब वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको सेल से बाहर फेंका जा रहा है. ठीक है, तो यहां पर भी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है सेल से, और ऑक्सीजन को अंदर लेकर आया जा रहा है. एट ऑर्गेनिज्मिक लेवल, एट द लेवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, एट इंडिविजुअल लेवल भी यही काम हो रहा है. द एयर कंटेनिंग मोर ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड इनसाइड, व्हाइल द एयर कंटेनिंग मोर कार्बन डाइऑक्साइड इज exhaled or it is moved outside the body. Okay?
अब जो सेलुलर रेस्पिरेशन है, इट इज फर्दर divided into two main categories. Types of cellular respiration. On the availability of oxygen, it is of two types. Number one is aerobic respiration, which is a respiration which occurs in the presence of free oxygen. That type of respiration is known as aerobic respiration. In this respiration, the fuel, that is glucose, is oxidized completely into carbon dioxide plus water plus ATP plus heat. Clear? और जो दूसरी कैटेगरी है सेलुलर रेस्पिरेशन की, दैट इज anaerobic respiration, which is also known as fermentation. इसको fermentation भी बोलते हैं. Clear? अब anaerobic respiration, it occurs in the absence of oxygen. जब ऑक्सीजन नहीं होगी उस वक्त जो रेस्पिरेशन होगी, that will be termed as anaerobic respiration or it is called fermentation. अब डियर स्टूडेंट्स, जो anaerobic respiration है, जिसको हम fermentation कह रहे हैं, इसको फर्दर हम दो तरह से डिवाइड करते हैं. Now dear students, in anaerobic respiration, it is further divided into two types. Means the fermentation, it is of two types. Number one, the lactic acid fermentation, and the other one is alcoholic fermentation. Clear? So lactic acid fermentation, इसमें क्या होगा? It consists of glycolysis followed by reduction of pyruvate by NADH to lactic acid. तो यहां पर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में ग्लाइकोलाइसिस होगी, उसके बाद ग्लाइकोलाइसिस का जो एंड प्रोडक्ट है, दैट इज द पायरुवेट्स, इट इज फॉलोड बाय द रिडक्शन ऑफ पायरुवेट्स बाय NADH इनटू लैक्टिक एसिड. सो हाउ इट अकर्स, इट इज लाइक C6H12O6 plus 2NAD. It is converted into 2C3H4O3 plus 2NADH plus 2H. तो यहां पर this is the glucose and this one is the pyruvate. This is pyruvate. Clear? अब इस pyruvate की होगी, then it is followed by the reduction of the pyruvate C3H4O3 plus 2NADH plus 2H. It is now converted into 2C3H6O3 plus 2NAD. So here is, this one is the lactic acid. And this is pyruvic
acid. Clear? And in case of alcoholic fermentation, it consists of glycolysis, followed by the decarboxylation of pyruvate to acetaldehyde, and then reduction of acetaldehyde by NADH to ethyl alcohol or ethanol. Clear? Or how it will be presented? Here is C6H12O6 glucose plus 2NAD. It will form 2 molecules of pyruvic acid, C3H4O3 plus 2NADH plus 2H ions. And then this is followed by the 2NADH plus 2H plus 2C3H4O3 into 2C2H5OH plus 2 carbon dioxides and 2 NAD. So this is called as alcoholic fermentation. यहाँ पर जो पॉइंट आपने याद रखना है, जो इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको डिलीवर करना चाहता हूं कि लैक्टिक एसिड में रिडक्शन होगी ग्लाइकोलिसिस के बाद. ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट है पायरुवेट, विल सी इन दिस लेक्चर, और उसकी होगी रिडक्शन. याद रखिए, ये टर्म्स याद रखने वाली है. इसकी रिडक्शन होगी किसके अंदर? टू लैक्टिक एसिड. किसके जरिए? बाय NADH, यानी NADH यहां पर इस्तेमाल होगा, एज यू कैन सी ओवर हियर. और यहां पर ग्लाइकोलिसिस होगी, ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट पायरुवेट बनेगा. पायरुवेट की पहले होगी डीकार्बोक्सिलेशन, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया जाएगा और उससे बनेगी एसिटाल्डिहाइड. एसिटाल्डिहाइड की फिर होगी रिडक्शन. यहां पर डायरेक्टली रिडक्शन हो रही थी पायरुवेट की, यहां पर डीकार्बोक्सिलेशन हो रही है पायरुवेट की. ये डिफरेंस याद रखना है. और यहां पर रिडक्शन थी पायरुवेट की, जबकि यहां पर रिडक्शन हो रही है एसिटाल्डिहाइड की. और करवा कौन रहा है? द सेम थिंग, द NADH. क्लियर? यहां पर रिडक्शन होकर के बनता है लैक्टिक एसिड, यहां पर एसिटाल्डिहाइड की रिडक्शन होकर के बनता है इथाइल अल्कोहल या एथेनॉल. सो दीज आर द इक्वेशंस. डियर स्टूडेंट्स, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो है, इट अकर्स इन यीस्ट. Clear? While the lactic acid fermentation, it occurs in bacteria, mean the prokaryotes, plus mammals, including humans. और humans में कहां पर होती है? ये इसको मैं ऊपर लेके जा रहा हूं. In humans, it occurs during strenuous exercise. और होगी कहां पर? इन मसल्स. और इससे क्या बनेगा? जो लैक्टिक एसिड, द लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन होगी, इट विल लीड टू मसल फैटिग. और जिसको हम मसल एक भी कह सकते हैं. ठीक है, खलियां पड़ जाना, जब जरूरत से ज्यादा आप अपनी मसल से काम ले रहे होंगे.